Beta, today I'll try to touch some of the grammar topics. Fine. So we start with the topic determiners. You know that what is determiner? It is used with noun. It describes the category of the noun. This more description to the noun. And sometimes these some of the determiners they are taken as adjectives also because they modify the noun. They tell us about the noun, the quantity of the noun and some more. So on page number 37, to revise determiner, you can watch the list there. A big list is given there. A nice list is there. Kinds of determiners. Fine. So beta articles a and the. You know that where we use a. For one article we use. For singular article we use a. है ना? एक के साथ a यूज करते हैं एंड ऑल द वर्ड स्टार्टिंग विद अ साउंड अ ई आई ओ यू है ना. आपको याद होगा आपने किया था a e i o u. Actually these are the sounds. We have to go for the sounds, that is a, e, o, u. Fine. Not alphabets. Not alphabets. Might be that a word is not starting with these words. For example, honest, है ना? But we use and with honest. Clear? Clear? So the word starting with these vowels we use and. बाकी singular के साथ a. Means a and an are otherwise same. Means one. Okay? इसके अलावा, for example, the word university. Now university word, it starts with U. This vowel is here, but it is not U actually. It is j sound. अगर आप हिंदी में बात करें तो ये कौन सी साउंड है? य. But we will go for the U sound only. So university or university. We won't use here n. अब यहाँ पे n यूज नहीं करेंगे. हम साउंड पे जाएंगे. हम अल्फाबेट्स में नहीं जाएंगे. ठीक है? According to these vowels means sounds. Clear? जैसे आप हिंदी में करते स्वर एंड व्यंजन. द सेम वे इन इंग्लिश देयर आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. है ना? तो इनके अलावा बाकी जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं दे आर द कॉन्सोनेंट्स. फाइन. विद दीज वी यूज एंड. क्लियर? द यू नो वेयर वी यूज द इज यूज्ड विद समथिंग पर्टिकुलर. यू नो द इज पर्टिकुलर डिटरमिनर. ये किसी पर्टिकुलर और बिग लिस्ट इज देयर. यू विल बी हैविंग अ लिस्ट हियर. Yes, on page number 40, the definite article the. Page number 39, it starts on page number 39. The is a definite article. Definite means particular article. For example, in a sentence, I saw a girl. Fine. In first sentence, it is given a girl. I saw a girl. There, in the next line, the girl was frightened or scared or afraid of something. Fine. Now I am using the for the same girl. The girl is same, but now I am talking about a particular girl that I spoke about in the first sentence. जिसका जिक्र मैंने पहले सेंटेंस में किया, मैं उसी गर्ल की बात कर रही हूँ, इसलिए I will use the. Otherwise, a big list is there on page number 40. Fine. The first way superlative degree, you know. The superlative degrees के आगे the use होता है ना? Then with all the planets. Then for particular category, अगर एक person को man को मान लो category के लिए use किया जाए तो उसके use कर सकते हैं. The dog is faithful. The dog is a faithful animal. It means the dog is for all. This dog is for all. Then before the names of, list is there. Range of the mountains, group of islands, rivers, gulf, canals, seas, oceans, well-known buildings, the golden temple दिमाग में रखो. ठीक है? उसके आगे यूज होगा holy books, the रामायण है ना, the गीता. Then newspaper with title you can remember for the newspaper titles. Then trace, the Shatabdi. Then cardinal directions, the east, the south for the directions. Interventions, it means for the planets and for the direction, the sun, moon, the sky, because they are particular.
Means when we talk about something particular, we use this article the. Clear? Then on the list, page number 37 beta. I come back to the list. Possessive case, my, know, possessive as we use. It is same of adjective. Clear? Then demonstrative, this, that, these, those. Distributive. Here I want to tell you something about distributives. For distributives, in distributives beta, either is used for option, in the sense either this or that. You know, it is a correlated conjunction also, either and or, है ना? So this either means either of the two. जब हम एक ऑप्शन की बात करेंगे, दोनों में से एक. Either side या दोनों means either side of the road was covered with grass. Means दोनों तरफ. ठीक है? Fine. Then we have each and every. Each is used for smaller concept. जब हम किसी ग्रुप में, it means everyone. Each and every means everyone. Fine. Now each when the concept is smaller one. So smaller one means, for example, in the class. Each student in the class. Fine. But when we talk of the school, अब इससे bigger concept क्या है? School. लेकिन वो comparison में रहेगा. Every student of the school was very happy. Now we talk about the bigger concept. Fine. For country, for means if it is for small regiment, अगर हम soldiers की बात कर रहे हैं, अगर हम एक कैबिनेट की बात कर रहे हैं, एक रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, तो we will use each. लेकिन अगर हम कंट्री के every soldier की बात करेंगे, then we will use every. Fine. Next we have these quantifiers and some of the numbers are same. ठीक है, कुछ quantifiers या determinants of numbers कुछ same है, but even then some common are, for example, many, difference of many and much. This is used for the countable things, countable articles, countable noun, many students. Fine. And this is for uncountable. Much is used, much happy, much sorrow, some abstract noun or some kind of sugar. You can say little sugar. उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? Little sugar, जिसको काउंट नहीं कर पाते. The same is for the few and little. It is again for countable we use few and for uncountable we use little. Clear? Then we have some, any. Beta some means some, you know, some students, कुछ students, ठीक है? But this any, this also means some, but it is used in negative or interrogative sense. जब भी हमें क्वेश्चन में पूछना हो कि कितने, कुछ कितने, then we use any. And when we have to say use this some, it means the response is positive, right? Any means something negative. It is used in negative and interrogative sense. Did you meet any? It means आप पूछ रहे हैं. Did you meet any friend there? Fine. So इसका मतलब है कि आप inquire कर रहे हैं. You will use any. Clear? Then for this few and little, beta there are three categories: few, a few, and the few. The same is for a little and the little. Fine. You know that this is used for the countable, and this is for uncountable. Clear? But when these words are used without any determiner a and the, then these are negative. But when we have a few, I have a few friends. It means मेरे कुछ दोस्त हैं. Fine. Now when we have, where will use this the few? The, you remember, it is definite article. It is particular article. जब हम the लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम कुछ खास की बात कर रहे हैं. It means the few students present there were not sincere. ठीक है? अब वहां पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सिंसियर नहीं है. यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कौन से बच्चों की? जो वहां पे प्रेजेंट है. इट मीन समवेयर देयर विल बी सम डिस्क्राइबिंग फ्रेज और क्लॉज. ठीक है?
जब हम द का यूज करें इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. Again, then you have these interrogative. Interrogative, again, what, which, where. Now I come to models. You know, models are the verbs of some kind of expression. जब हम किसी verb में models. In models, you have that page number 104. Yes, beta. Page number 104. I will discuss some of the common models where you get confused. Yes, beta. Now model is a verb used for another verb to express the mood. Some kind of mood is added. There are main verbs. It is a verb in the sense. There are two kind of main and auxiliary verbs. Fine? Clear? Main verbs are which can be converted into past. Go, went, gone. Any common verbs you know, main verbs. Then there are auxiliaries. Auxiliaries are primary auxiliaries, and then modal auxiliaries. These are it is auxiliary actually, and then semi-modal. This primary are we, have, do. जो हम करते हैं be was, been, has, have, had, and then do, does, did जो करते हैं. They are primary auxiliaries. Then modal auxiliaries. We are going to do these. Fine. So I'll take one by one and tell you. Now when first I take for these models, I take simple. Let's start from may and can. Yes, beta. May and can. Yes. Can you give me any example, Gauri? May का example दो. देखो नहीं. Don't look at the books. Now look at me. May God bless you. Any other child? May God bless you. Any other? आप में से आपके दिमाग में आता है? Any other student? Daily आप यूज करते हैं ये? Daily? Yes. May I ask you question? Good. May I ask so and so? Fine. It means we use this may for wish. We use may for wish. When we wish someone, may God bless you बोलते हैं ना. Then may I come in. Daily use करते हो? To seek permission. To seek permission. Then for doubt. When we are not sure. है ना? It may rain today. इस सेंटेंस को याद रखना बेटा. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. इट मीन्स आप श्योर नहीं है. वी हैव सम डाउट. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इसी तरह जब इसका पास्ट यूज करना है देन वी कैन यूज माइट. क्लियर? फॉर सम पास्ट रेफरेंस. मे का पास्ट क्या है? माइट. देन आई कम टू कैन. कैन कहां पे यूज करते हैं? कैन इज यूज्ड फॉर कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन. आई कैन डू इट. बेटा कुछ सेंटेंसेस, सम सेंटेंसेस यू शुड कीप इन माइंड. मुझे अपने दिमाग में सेट कर लेने चाहिए. उसके साथ मॉडल के साथ के बेस्ट रहता है. जैसे मैंने आपको बोला कि इससे रिलेटेड बताइए. अब कैन है तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए आई कैन डू इट. जब भी हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है तो हम क्या बोलते हैं? डोंट अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, यू कैन डू इट. करते हैं एनकरेज करने के लिए. इसी तरह हम अपने आप से क्या बोलते हैं? व्हेन आई से आई कैन डू इट, इट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट. देयर वी यूज कैन. फाइन. Then we have the category of should. Okay, we talk about this might. Might, may का might है past, can का past है could. Okay. Now this, they are having different use also. They are used for doubt also. Otherwise some kind of suggestion also you might come. Then
कुड एंड वुड दैट आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। वुड एंड कुड का जो यूज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ कम टू शुड। अगर हम प्रेजेंट पास्ट का चलते हैं ना वेवरिंग, ओके आई टेक दिस शैल एंड विल। बेटा रिमेंबर इन फ्यूचर टेंस वी यूज शैल विद आई एंड विल विद अदर प्रोनाउंस, ठीक है ना। आई के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी के साथ विल करते हैं। बट हियर वी विल यूज ऑपोजिट, मीन्स यहाँ पे हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, विल। इसका मतलब ये है whenever in writing you read I will, it means some kind of confirmation and determination is there. When we use this opposite, for example he shall, आपने कहीं पढ़ लिया he shall तो होता नहीं है, but it is as a model. It shows the determination of the person, means he will definitely do it. Clear? Means I और we के साथ as a model हम क्या यूज करते हैं, will, और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ क्या यूज करेंगे, मीन्स ऑल, ही, शी, दे और अदर प्रोनाउंस। ओके, एम आई क्लियर? नाउ बेटा शुड, मस्ट एंड हैव टू, बट वी डू शुड फॉर suggestion, simple advice. Should, must when some kind of little pressure is there from the teacher or parent side, some command is added. You must work hard, your exams are going to start within 2 days. Must इसका मतलब मैंने आप पे थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया। अगर सिंपली सजेशन देना है तो should, सारा साल क्या चलता है, should, but in their exams you must, fine. And then have to. Have to means these are rules, you can't avoid them. You have to wear uniform when you come for exam, fine. वहां पे हम क्या यूज करेंगे, have to. Now ought to is somewhere moral obligation just like should, ठीक है, ये भी suggestion के लिए यूज होता है। Clear? Now I come to could. Could and would are used for some kind of humble, polite request. Would you please, ये ब्रेन में रख लो बेटा, would you please pass this book to me? जब किसी को रिक्वेस्ट करना है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, would and गुड, ठीक। नाउ मॉडल ऑक्सिलरीज, जब हम ऑक्सिलरीज की बात करें थे तो हमने सेमी मॉडल भी करी, ठीक है। सेमी मॉडल्स क्या होती है बेटा, जो एज ए डायरेक्ट वर्ब यूज होती है, डेयर, नीड। परसों आपने सेंटेंस किया, उसमें था कि ही वुड हैव नीडेड, फाइन, इट मीन्स नीड वाज यूज्ड एज द मेन वर्ब। क्लियर? Dare is used for some kind of threatening, जब हमने किसी को you dare not enter my room, फाइन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, dare। जब किसी को थ्रेटन करना हो, किसी को डराना धमकाना हो, या तुम्हारी हिम्मत कैसे, how dare you, बोलते हैं ना टीचर, how dare you talk to me like this, बोलते हैं ना। So it is for some kind of डांट के लिए या थ्रेटनिंग के लिए। Then need is again used for the direct verb, main verb, that is semi-modal. Okay, now you are having, I think you had a good list. I told you earlier also, had better, would rather. Please, okay, thank you.